So if we do not have questions, we will not get the answer. So besides having an entrepreneurial and leadership mindset, it is important to have curiosity, a question in life. And once we have that question, it is easier to find solution. Therefore, before we enjoy the luxury of life called Apple iPhone types, it is important to establish our entrepreneurial mindset, our leadership mindset, have lots and lots of questions. Today we are celebrating the Republic Day. Why? Because on 26th of January 1950, we adopted the Constitution of India. And do you know, since its adoption, the Constitution of India has been amended 105 times. 105 बारी बदला जा चुका है, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो बदलाव आवश्यक है. So when situations change, decisions change, actions change. There is nothing constant in life, and there is no single formula in life. And therefore, we need to have major flexibility in terms of all actions we need to take. And I'm going to quickly share with you 10 action steps we can take to be successful in our life. We all are born leaders, say 3 Apple story. But then how do we sharpen our leadership? We are leaders in all the domain. Leader का मतलब ये नहीं है कि बाहर जाके पॉलिटिकल लीडरशिप दिखा देना. आप अपने अपने क्षेत्र में लीडर हैं. अगर आपने एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें लीडर हैं. आप साइंस की बात करते हैं, आप उसमें लीडर हैं. आप सोसाइटी में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, आप उसमें लीडर हैं. आप किसी को एक अच्छी बात समझा देते हैं, आप अपनी लीडरशिप दिखाते हैं. तो इस लीडरशिप को शार्पन कैसे किया जाए? आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग 10 टिप्स विद यू. एंड सिंस आई एम फॉन्ड ऑफ एक्रोनिम, so maybe you may like to write down 10 alphabets of leadership, and I'll pick up one alphabet each and give you 10 pointers, and let me see how many of you write that quickly on Facebook. And in case you are liking the talk, well, do give me a thumbs up also in between. I love all those. So the first alphabet is L. L for learn. Learn. अभी देखिए ना क्या वंडरफुल काम किया. 22nd के हमारे प्रोग्राम पे क्विज के ऊपर 10 out of 10, 30 out of 30. I was so proud of that. This is what learning is all about. और हमारे को लर्निंग में अपनी 4 चीजों को ध्यान रखना है. एक हमारी नॉलेज, दूसरा हमारी स्किल्स, तीसरा हमारी हैबिट्स, एंड चौथा हमारा एटीट्यूड. नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड हैबिट्स. कभी मौका लगेगा तो इन सब चीजों के ऊपर मैं बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ बात करूंगा. आज मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, इसलिए मैं जल्दी से अपनी दूसरे पॉइंट्स के ऊपर चलूंगा. दूसरा अल्फाबेट क्या है? ई. एक्सप्लोर. आस्क क्वेश्चंस. पूछिए. मैडम अगर परेशान भी होती है तो डजंट मैटर. मैडम के पास आंसर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. गूगल अंकल तो हैं, गूगल पे जाके पूछ लीजिए. क्योंकि जो मैथ्स में आप सीखते हो, जो साइंस में सीखते हो, अगर आप मूवी थिएटर में देखते हो तो देखो वहां पे फॉर्मूला कौन सा लगा हुआ है, किस बेसिस के ऊपर ये एंगल्स बने हैं, किस बेसिस के ऊपर प्रोजेक्शन हो रही है. एंड कोरिलेट दैट विद योर स्टडीज, कोरिलेट दैट विद योर लर्निंग, एंड दैट इज व्हाट एक्सप्लोरेशन इज ऑल अबाउट. द नेक्स्ट अल्फाबेट इज ए. एक्ट. सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, हमारे को एक्शंस लेने पड़ेंगे. और ये एक्शन जरूरी नहीं है कि आपने पूरे दुनिया को बदलने वाले एक्शंस लेने हैं. अरे छोटे छोटे एक्शंस भी लीजिए. अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर पे दिखाइए, घर के कामों में हिस्सा बटाइए. चाहे कपड़े धोने से लेके आपने छोटे छोटे बिल जमा कराने से लेके दूसरी एक्टिविटीज करने वाली बात है, वो सब कीजिए. क्यों? क्योंकि जब 12th के बाद में कहीं आपको बाहर जाना पड़ा और आपने ये एक्शंस लेके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर नहीं ली, तो पेरेंट्स आपको बाहर कैसे भेजेंगे भैया, कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है करना. इसलिए अभी से रिस्पॉन्सिबल होना शुरू कर दीजिए, तभी तो पापा बोलेंगे ना, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी. द नेक्स्ट अल्फाबेट इज डी. ड्रीम बिग. ड्रीम बिग एब्सोल्युटली. और उसका मतलब ये है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि सपना वो नहीं है जो आपको सोते हुए लेना है, सपना वो है जो आपको सोने ना दे. इनफैक्ट 1977 मेरे दिमाग में आ गया
कि मुझे मेरिट लिस्ट पे आना है। सुबह शाम उठते बैठते मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचता था, पढ़ाई पे फोकस रहता था और भगवान की दया से आ गई। तो वो ड्रीम में जो भी आप ड्रीम लेंगे उसको आपने फिर एक्शन में कन्वर्ट करना है। द नेक्स्ट अल्फाबेट इज ई, एनर्जाइज। अपने आप को पूरा एनर्जी, क्या ढीले बैठे रहेंगे, बिस्तर में घुस के पढ़ाइयां नहीं होती हैं। अपनी बॉडी में एनर्जी महसूस कीजिए, और जब वो बॉडी में एनर्जी आएगी तो वो एनर्जी दिमाग में आएगी। इसलिए वो एनर्जी जो है वो आपके स्माइल से नजर आएगी, वो एनर्जी आपकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आएगी, वो एनर्जी आपके हर काम में नजर आएगी, तब मजा भी आएगा। इसलिए एनर्जी जो है वो दूसरों को भी एंथ्यूज करती है, दूसरों को भी एक्साइट करती है। स्माइल तो आपका ऐसा इन्फेक्शन है, जब एक बारी किसी को स्माइल करोगे आपको गुस्से की तरह देख ही नहीं सकता। सो देयरफॉर कोविड की बजाय दूसरों को इन्फेक्ट कीजिए विद योर ओन स्माइल एंड विद योर ओन बॉडी एनर्जी। द नेक्स्ट अल्फाबेट इज आर, रिकॉर्ड, ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड। सर्जी बुक्का ने कितनी बार पोल वॉल्ट में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 सेंटीमीटर से तोड़ा, और हमेशा ही वो बोलता था ओनली आई कैन ब्रेक माई ओन वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो यू हैव टू कंसिस्टेंटली कीप ब्रेकिंग योर ओन रिकॉर्ड। आज मैंने ये परफॉर्मेंस की है, कल मैं इससे थोड़ी सी ज्यादा करूंगा, कल परसों मैं उससे थोड़ी सी ज्यादा करूंगा। और जब आप कंसिस्टेंटली अपने आप रिकॉर्ड तोड़ते जाएंगे, अपना ही कंपटीशन अपने आप से आप जीतते जाएंगे, फिर देखिएगा आपकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया होती। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है? एस, शेयर। शेयर, शेयर व्हाट? शेयर योर लर्निंग। सब कुछ अपने पास रख दो तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपके पास 1 रुपया और दूसरे के पास 1 रुपया और दोनों ने एक्सचेंज कर लिया तो क्या मिला? दोनों के पास 1-1 रुपया ही तो है। लेकिन अगर आपके पास एक आइडिया और दूसरे के पास एक आइडिया है तो क्या हुआ? आपके पास दो दो आइडिया हो गए। क्लास में 40 बच्चे हैं, सबने एक एक करके एक आइडिया सबके साथ शेयर कर लिया, तो 40 × 39, देखिए कितने आइडियाज आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन शेयरिंग, शेयरिंग योर लर्निंग, शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। और आजकल तो सोशल मीडिया पे हम बहुत जबरदस्त शेयरिंग करते हैं, तो ये फालतू के फॉरवर्ड्स की गेम खेलना छोड़ दीजिए, अपने दिमाग लगाइए, इंटेलिजेंट चीजें शेयर कीजिए, कुछ चीजें डिस्कवर कीजिए और उन्हें शेयर कीजिए। फिर देखिए आप कैसे हीरो बनते हैं, क्योंकि आप लोगों से वो चीजें शेयर कर रहे हैं जो उनको नहीं पता। ये थोड़ी है कि आप तो ट्रैफिक कांस्टेबल बन गए, इधर से एक फॉरवर्ड आया और आपने 50 को और भेज दिया। दैट इज स्टूपिडिटी, नॉट शेयरिंग। ओरिजिनलिटी लेकर आइए। द नेक्स्ट अल्फाबेट इज एच, ह्यूमिलिटी। आप अनोखे नहीं है माँ बाप के लाडले, और भी हैं, सभी लाडले हैं। इसलिए जिंदगी की कामयाबी आपकी इंटेलिजेंस पे नहीं, आपकी आईक्यू पे नहीं, आपकी ईक्यू पे चलेगी, इमोशनल क्वेश्चन। और ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इन टर्म्स ऑफ हाउ डू यू रिलेट विद पीपल इज वेरी वाइटल। कभी डिटेल्स में फिर बातें करेंगे, लेकिन जरूरी क्या है कि माँ बाप ने जो वैल्यूज दी हैं, जो स्कूल ने वैल्यूज दी हैं, मुझे आज भी याद है जो स्कूल में हमें धर्म शिक्षा में सिखाया जाता था, वो सब लेसन मुझे आज भी याद है। वो जो वैल्यूज हैं वो जिंदगी में काम आती हैं हमारे। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, कर्टसी इन कम्युनिकेशन। तो जब ये सब चीजें होंगी तो लोग आपका आदर करेंगे। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि कार के अंदर इंजन ऑयल नहीं होगा ना, तो कार का इंजन जैम हो जाएगा। इसलिए अपनी ह्यूमिलिटी का मोबिल ऑयल डाल के रखिए रिश्तों में। अक्कड़ तरीके से बात करेंगे तो टूट जाएंगे, मुलायम रहेंगे रिश्तों में, हम्बल रहेंगे, रिस्पेक्टफुल रहेंगे, तो हर तरफ से अपना अपना रास्ता निकाल लेंगे। नेक्स्ट अल्फाबेट है आई, इनोवेट, कीप इंप्रूविंग, कंसिस्टेंटली कीप इंप्रूविंग इन योर रिलेशनशिप, इन योर आइडियाज, इन योर वर्क। हर बार एक अलग तरीके से सोच बना के रखिए, बिकॉज वही चीज बार बार आपको पसंद नहीं आती है। अगर आपको फ्रेंच फ्राइज पसंद है ना, तो रोज सुबह दोपहर शाम मम्मी आपको फ्रेंच फ्राइज दे, पूरे हफ्ते फ्रेंच फ्राइज दे ना, तो आप आलू के नाम से ही घबरा जाएंगे, क्योंकि आपको खाने में वैरायटी चाहिए, आपको कपड़ों में वैरायटी चाहिए। तो काम करने में वैरायटी क्यों नहीं, उसमें इनोवेशन क्यों नहीं? वो तो हमारे को क्रिएट करनी पड़ेगी, एंड दैट इज important to become part and parcel of our life. And finally, P, persevere. हर बारी कामयाबी नहीं मिलेगी, जिंदगी रोलर कोस्टर है, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे। मैं कितनी बार फेल हुआ, कितनी बारी झटके खाए, कितनी बारी डिसअपॉइंटमेंट मिला, लेकिन उसके बाद फिर उठा और चल पड़ा। जरा सोचिए, आप सड़क पे जा रहे हैं और एक गड्ढे में पैर आ गया और आप गिर गए, तो क्या आप वहीं पर बैठे रहेंगे?
और बोलेंगे लोग मुझे उठाते क्यों नहीं, ये गड्ढा किसी ने क्यों बनाया, ये सरकार का दोष है। या आप उठेंगे, कपड़े झाड़ेंगे और चल पड़ेंगे। अरे भाई, आप उठेंगे, कपड़े झाड़ेंगे, चल पड़ेंगे, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। गड्ढे तो आते रहेंगे, गड्ढों से बच के निकलना बड़ा जरूरी है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैंने एक आर्टिकल भी इसके ऊपर लिखा कि पानी बनो। पानी जो है ना, जब तेजी से चलता है तो अपना रास्ता निकाल लेता है, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ता हुआ निकल जाता है, उनके बीच में से निकल जाता है। लेकिन जहां पर अड़ जाता है ना, वहीं सड़ जाता है। अब ये फैसला हमारे को लेना है कि हमें अड़ना है, सड़ना है, या आगे बढ़ना है। Therefore, it is very important that we need to become an aimer and not a blamer. ब्लेम अब दुनिया को कर सकते हो, लेकिन उससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। मैंने जिंदगी में कोई भी कामयाब आदमी ब्लेमर नहीं देखा। जो एमर होते हैं ना, वो ही सक्सेसफुल होते हैं। So these are my 10 pointers in terms of sharpening your leadership. Let me revise that very quickly for you. L for learn, E for explore, A for act, D for dream, E for energize, R for record, S for share, H for humility, I for innovate, and P for persevere. And these pointers I wrote specially for my friends at Hansraj Model School. So this is absolutely oven fresh talk that I have created. But then the question is, इस पे काम कैसे होगा? इसके लिए आपको HRMS वे को फॉलो करना पड़ेगा। और इससे मैं अपनी टॉक को कंक्लूड करूंगा। 4 तरीके से काम करना पड़ेगा इस लीडरशिप के ऊपर। रेडी हैं? रेडी हैं तो जरा थम्स अप दीजिए और बताइए कि यू आर रेडी एब्सोल्युटली। तो 4 चीजें क्या हैं? HRMS। H, हाई प्रायोरिटी। जो टारगेट रखा है, अगर वो हाई प्रायोरिटी का नहीं है तो बात क्या बनने वाली है? फिर तो हाँ, हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, ऐसे जिंदगी में कामयाबियां नहीं होती है। फिर तो सिर्फ यही फोकस होता है, मुझे यही चाहिए, हाई प्रायोरिटी। और रेगुलर एक्शंस। प्रायोरिटी तो बना ली, लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल बना के सामने सजा देते हैं कि मम्मा देखो कितना बड़ा खूबसूरत टाइम टेबल बना दिया। माँ कहती है पुत्र काम तो कर। तो रेगुलर एक्शंस आर वेरी वाइटल। पुरानी कहावत है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अरे मत खाओ रोज का एप्पल। 30 एप्पल्स महीने की 30th तारीख को इकट्ठे खा लेना, डॉक्टर आपके घर जरूर आ जाएगा 30 एप्पल खाने के लिए। आपको रोज का एक एप्पल खाना आसान है, बजाय कि 30 एप्पल एंड में खाने के। तो रेगुलर एक्शन इन योर स्टडीज, रेगुलर एक्शन वट एवर यूर परस्यूइंग इज वेरी वाइटल। नेक्स्ट इज एम, मेजर प्रोग्रेस। पता तो लगे आप कैसे चल रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। और चाइना में एक कहावत है, इवन व्हेन यू फॉल फ्लैट ऑन योर फेस, जब मुंह के भर भी गिरे, even when you fall flat on your face, you are still ahead of where you were. अगर आप मुंह के बल भी गिरे तो जहां आप खड़े थे वहां से तो आगे बढ़े। अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना सीखिए, क्योंकि तभी लीडरशिप के वो 10 पॉइंट्स काम आएंगे। पता तो लगेगा हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। एंड फाइनली एस, स्टे फोकस्ड। Stay focused is very vital in terms of whatever your goals are. Because we said high priority हो गया, regular actions हो गया, measurement of progress हो गया, लेकिन फोकस नहीं है तो क्या होगा? इसलिए एक बड़े महान ज्ञानी व्यक्ति ने एक फिल्म में कहा था, उसका नाम आप सबको मालूम है अच्छी तरह से, हल्के मजाक में कह रहा हूं, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो एक बार अगर आपने अपनी कमिटमेंट खुद को कर दी तो मत सुनिए कुछ और चीज की। स्टे फोकस्ड, दैट वाज सलमान खान प्लीज। सो HRMS वे इज वेरी वेरी वाइटल। हाई प्रायोरिटी, रेगुलर एक्शंस, मेजर प्रोग्रेस एंड स्टे फोकस्ड। एंड माइंड इट, आप बड़े होंगे तो आपको सिर्फ 2 चीजों पे देखना है, चॉइस है आपकी। आपका हाथ ऐसे हो या ऐसे हो, दोनों में फर्क क्या है? जिंदगी बदलती रहेगी, हमेशा बदलती रहेगी। अगर आप ऐसे हैं हाथ रखते, तो यू आर अ चेंज मेकर इन लाइफ। और अगर आपका हाथ ऐसे ही है, देन यू आर अ चेंज टेकर इन लाइफ। कि दुनिया कुछ करेगी और आपको मिलेगा। ये चॉइस आपकी है, वेदर यू वांट टू बी अ चेंज मेकर और अ चेंज टेकर। अ ट्रू हंसेरियन will always remain
a change maker and not a change taker. I close it here. Thank you very much. Really appreciate. We thank you, sir, for your words. Rihanna, please stay on the platform, but I'll borrow a few seconds from you. Sure, right? ma'am. Sure. Good morning, Hansraj Model School and all its stakeholders, all our near and dear ones. We are live on Facebook for the Republic Day celebrations 73. Azadi Ka Amrit Mahotsav, Veer Gatha. We have talked about all the issues, all the notifications by the government and by the CBSE. At the moment, we have a record audience which is live with us. Sir was with us. And we had a talk show just a couple of days back with him, along with Dr. Arvind Kumar. And for this, after the talk show, we decided to have a quiz for the children. It is very heartening to note that we got a wonderful response. Thank you, sir, for this beautiful talk show. Thank you very much. It was extremely meaningful and we got a lot of positive responses. For the same, may I now request Madam Himal to declare the result of the quiz, because I'm sure there'll be so many in the audience who will be waiting to listen to their names. Madam Himal, may I now request you to declare the result for the quiz. Thank you, Nishi. We did declare the results a few minutes ago, but there is a request in the comments section or by the parents that could we please show it again, because some of them missed and they would like us to share it again. It's on their request that we are doing it. But before I share the results, sir, I must thank you. I'm going to do it in detail, Mr. Rajiv Khurana. But before we do it in detail, I have really a lot to say. And I am going to say that today, based on what you have shared with us today, it might be just mere acronyms for you, but for us, the way you have made the acronyms to suit the HRMS and the Hansraj family, and hats off to you for that. I'll just take a minute, sir, and we'll just read out the results on the request of all the parents. This is the result of the talk show that we had, and indeed glad to share with you all the results of the quiz that was held. From grade 3, we have Akshita Arora, Ishita, and Karthik Uppal. The sections are mentioned against their names, as you can see on the screen. And from grade 4, we had Demya Singh, Jia Diwan, and Nikunj Dagar. From grade 5, we had Akshat, Devinder Kapoor, and Vaibhav Sarkar. Congratulations, dear children. We had just 10 questions for this level based on the talk show by you and Dr. Arvind. Then from grade 6, we have Arohi Gupta, Himank Arora, and Ananya Singh scoring full on around 30 questions, all the 30 in a fantastic amount of time. From grade 7, we have Mahita Malhotra. From grade 8, we have Mannat Kaur and Tanmay Saini. From grade 9, we have Yuvraj Gora, Dhruv Gupta, Anmika Mehta. From grade 10, we have Isha Kapoor, Anya Gupta, and Japmanya Kaur. From grade 11, we have Riya Gupta, Suvan Vadwa, and Arushi Soti. From grade 12, our senior most, we have Gurjas Singh, Mehek Manchanda, and Gumina Kaur Kataria. I congratulate all these top scorers for being attentive listeners and getting through the quiz with full scores. Congratulations to all of you, and I congratulate the parents for encouraging the children to watch the different programs of Hansraj Model School. And this was a very important one where we got a lot of good myths being broken and mindsets being, reset for the Omicron virus. Thank you all for your participation. Thank you, ma'am. Now I would like to thank Sir for his words so powerful they will resonate in our minds. Sir, you have given us some valuable lessons and we will surely benefit and learn from them.
These lessons are deeply embedded in the curriculum of Hansraj Model School, supported by a strong value system which propels us to be meaningful and purposeful citizens with a very clear message. Look not back, but forward. I would also like to mention that we have a record 1,000 plus audience watching us live on Facebook. It is a well-known proverb. Actions speak louder than words. With a charismatic and dynamic leader like Madam Principal, this proverb seems to do justice. The school takes great pride in sharing her achievements with all of you. The list is endless, but we definitely need to mention a few. Madam has been conferred with various prestigious awards like the CBSE Teachers Award 2019-20, the State Teachers Award 2020, Srimati Sushma Swaraj Stri Shakti Samman 2020. Crediting her invaluable efforts towards virtual learning during the pandemic, Madam has been honored with the Principal of the Year Award 2021. Madam Principal has also received an award from the Gandhi Smriti and Darshan for her exemplary contribution in promoting Mahatma Gandhi's life teachings, values, and ideals. Ma'am has always been a trendsetter. Under her leadership, the school has taken a pledge, Mera Bharat, Swasth Bharat. The school is encouraging students to get their COVID-19 immunization as a preventive measure. We stand committed to the government-driven vaccination policy, and our school had been fixed as a vaccination center from the 17th of January to the 20th of January. To live in the same spirit and abide by the philosophy of Swami Dayanand Saraswati, the school has started performing virtual Havan, where students, their parents, and grandparents together chant the mantras. The felicitations manifest the holistic approach of our stalwart and visionary leader. Ma'am, it is indeed an honor to learn under your esteemed guidance and leadership. May I now invite Madam Principal to inspire us with her motivational words and conclude the ceremony. Rihanna, thank you so much, but that was too generous of you to mention so many details. In fact, I feel Rajiv sir has done much more in his 25 years of living on this planet, as he shared, with his son, who happens to be 29 years old only. But thank you, Rihanna. Mr. Rajiv Khurana, what a beautiful day it has been to have you in our midst today. 1977 and 2022. It's been a long journey for you and for the school as well. It's always a pleasure, let me tell you, to invite our own alumni. You know, these are role models, inspirational models for our own children. Today, when they see you, they have a huge, they have been hugely inspired that they can do very well in the future. They can reach different places. Even students of commerce can do very well, as you have made very clearly mentioned how you were a topper at that level. And that too in the early times when we didn't have commerce wasn't a very preferred subject as well. Mr. Rajiv, the way you have grown as a human being is very visible to all of us today. The way you have made the special efforts to present before us the talk show that you had on the 22nd, it was indeed a pleasure to listen to you and the way you moderated with Dr. Arvind. It is always a pleasure. We look forward to many more such initiatives. ये बहुत अच्छा जानकर लगता है ना कि जब हमारा बच्चा आगे जाता है और पूरी दुनिया को समेट कर अपने साथ लेने की कोशिश करता है. That's what you have done for all of us. And that's why we are so proud of you today. We are also proud of the fact that you are making a huge difference in the community, in the society, and to the country with your initiatives. Whether it is just Lung Care Foundation, whether you are making initiatives to spread, instead of the disease, the masks to everyone, your mask drive, everything that you are doing is only talking about what you have learned during the 14 years of your stay in the school corridors. This is truly inspirational to all the parents who are watching, to all the children who are here present.
Mr. Rajiv, the acronyms that you have made for us today are really very interesting. HRMS, you began with an HRMS acronym and you ended with an HRMS acronym. And in between, you talked about the leaders, how to be a good leader, how to develop leadership skills, how to learn, how to explore by asking questions, how to act about what you are going to do and not just dream about it, how to be energized about it, how to energize yourself and record and break your own records. Now this is what we look forward to. और फिर वहां नहीं रुकने के लिए कहा आपने ये भी कहा बच्चों को कि उसके बाद आपने जो सीखा है उसे शेयर भी करो और हम्बल भी रहो। और आपने जो ह्यूमिलिटी और वैल्यू सिस्टम्स आपके हंसराज मॉडल स्कूल से सीखा है, चाहे वो रेस्पेक्ट करना हो किसी के लिए या बेसिक कर्टसीज हो, वो भी सिखाना है, वो भी शेयर करना है और वहां रुकना नहीं है। और आज की दुनिया में इनोवेट भी करना है। Without innovations, you won't really do well in life. This era is full of innovations and improving yourself, being consistent in making more and more innovations. And जब तक इसमें perseverance नहीं रहेगी, तो कैसे होगा काम? काम तो हो ही नहीं सकता. And I love the way you have put it across to the children, coming down to their level and sharing it. आज हमारे आजादी के अमृत महोत्सव पर इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? You are telling them how to be leaders for the future, and you are telling them how HRMS can do it by prioritizing, the way you have told them to prioritize, okay, high prioritizing, and how you will not be able to reach where you are unless you are very regular with your actions. उसके बाद फिर चुप करके नहीं बैठने के लिए कहा आपने, उन्हें बोला कि आप इंट्रोस्पेक्ट करो और मेजर करो अपनी ओन प्रोग्रेस को. वाओ, how much we have been telling that self measurement, self assessment, self reflection is so important, because unless that you do that, you won't be able to do anything in life. And the last one, the school wala S jo hai, stay focused. Mr. Rajiv, I really would like to say hats off to you, a big salute to you on this beautiful day, and for the learnings that you have shared with our children today in this gathering. Yes, sir, your positivity showed from the very first sentence when you said technical glitches hoti rehti hai, lekin we have to stay focused and we will continue. And that was so motivating for my children in this room. It is indeed so encouraging. Even I was a little, feeling bad that my children put in so much of hard work. My staff members put in so much of hard work. Will they get, disturbed by these small little glitches? But today, right now, when we are all here, you have more than thousands of people, parents and students watching you all across, not just Hansarians, let me tell you. There are teachers, students, principals, and lots of other parents and people watching us on the Facebook platform when we are live. Today is a very important day for all of us, not just Hansraj, it is for the whole nation. While we are ready to celebrate tomorrow, we had to schedule our program today due to the circular floated by the government of India that all our programs should be over before 9:30 tomorrow. Then we found it difficult to wake up the parents at 8 o'clock to be able to finish our program before 9:30, and we could have bigger glitches tomorrow due to the security constraints. But I guess even today was a beautiful day. As you can see, it's a beautiful morning, and having you in our midst has been indeed very fruitful. To all the children out there, to all the parents who are so engaged in these last 2 years in making the children the best citizens of our country ever possible. To our Prime Minister for the different initiatives that he has floated and initiated in these 2 years. It hasn't really kept us, within our walls, as we also showcased in our program. The children are happy and taking away a lot of positive things from these 2 years, a lot of learnings, as you have also shared, towards being good leaders, towards being good, shall I say, children at home and students at home again, at home these 2 years. We really salute all those children who have contributed towards being good citizens by staying indoors, which is very important, as even Rajiv Khurana ji said.
You stay focused, but stay indoors for the time being. Stay masked. He told you everything very clearly on 22nd and 24th as well. And you have been good citizens. You have made sure that India did not have a very bad situation when compared to the rest of the world when it came to COVID-19. You have done it all. And that's what you are good about. That's what you need to do for the nation in small ways, in your own homes, in your own ways with the family. I would also like to take a lot of pleasure in thanking the parents for their involvement in the students, in the children's, in their own wards, learnings over these 2 years, the way you have engaged them, the way you have involved yourself in everything that they do. You have given them a bit of everything. इसी से तो बच्चा अच्छा ग्लोबल सिटीजन बन सकता है. जब वो पहले लोकल सिटीजन सही से बने तभी तो ग्लोबल जा सकता है. आपने ये सारी उनकी लाइफ स्किल्स को इतनी मॉडिफाई कर दी, इतनी उसको रिफाइन कर दी इन 2 सालों में, that this will give you the fruits for the years to come. You will see them as wonderful children with the right amount of values, with the right amount of bonding with the country, with the right amount of ethos that we have in Hansraj and in the country. Let's bring them back to that. Today is indeed a very special day. These children who presented before you, we had prepared these programs much before 26. So you will see a lot of children not masked in some areas. You must be wondering, how did we do it? Remember, we took a lot of precautions and these were recorded very long ago. That was our secret. But the ones that were recorded a little later, you will see them all masked. We have always made sure that our children follow the SOPs. We have a lot of gratitude to the parents who made sure as well that they were following all the SOPs, all the HRMS that you have also suggested initially. All these things have been followed. And ye jo presentations they have all been made in-house. There has been no external help. It is all the hard work of the students and their own teachers. We had no IT specialists over here. These are all done by the teachers and the students, staff members of Hansraj. And you know your own school much better than the whole nation. And you know how much hard work they put in to bring out the best in our children in any sphere, in any area. I congratulate all the children who have participated and made this possible today. I congratulate the parents who supported them during these tough times to be able to do it safely. And I congratulate my whole Hansraj family for putting up such a wonderful show. Congratulations to everyone on this Ganatantra Divas for us. But the takeaway is leadership qualities. Hansraj encourages you all. As you can see, Mr. Rajiv Khurana, how he has achieved. He worked hard on his own self. And he gave you a fantastic tips as to how you can do it too. It is not difficult if you only want to. Hansraj makes leaders. You will see all our programs being coordinated, and we propose and we groom children to become the leaders of the future. अगर आप भी चाहते हैं, आप अपना हाथ बटाएं, हम आपका हाथ पकड़ के हम सबको यही करना है कि अपने देश के लिए बहुत अच्छे लीडर्स बनाने हैं. Leaders does not mean only netas that have to be on the political scene. Leaders are in every sphere. Leaders who can take a country forward with their small little contributions. Just like Mr. Rajiv Ji is doing. In his own way, he's making a difference. He's a leader. That's what we all have to do. I am trying to be a good leader by making my own contributions in the field of education. Every one of you can make a contribution and make India proud of you when you are contributing in some small way. Choti cheezon se, boond boond se hi to sagar banega. Let's all put our efforts together in making our country the very best. You will say, to hamara country to best hai. मैं कह रही उससे भी ऊंचा. Puri globally, we have to take it forward. Let it not be the initiative of just one man or one party or any one group. It is all of us together. And let's thank all the people who made this constitution possible on the 26th, on the 1950 year. And today we are sitting so comfortably in our homes and celebrating these moments. Let's give little time these 2 days towards the nation, and not just these 2 days. I always say
ये पेट्रियोटिक फर्वर आपको 2 बार नहीं आना चाहिए साल में, पूरे साल होना चाहिए. On that note, Jai Hind.